Hi everyone, good afternoon. Welcome to another session with Learn फटाफट। तो कंटिन्यू करेंगे। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर एंड दिस सेशन इज फॉर क्लास 10 CBSE एंड द सब्जेक्ट इज साइंस, जिसमें टर्म 2 का चैप्टर 13 हम करेंगे कंटिन्यू। एंड व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। So after today's session, you must understand, you will be, I'm sure आपको ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर की जो वर्किंग है वो कैसे होती है, what is an electric motor, and mainly what we will be studying. Let me tell you, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, what is it. Secondly, we will see what is the principle on which the motor is based, working of the motor, और then उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है, और इसी के बाद हम फैक्टर्स भी देखेंगे, फैक्टर्स विच अफेक्ट द फोर्स। ठीक है, या जो रोटेशन या स्पीड ऑफ रोटेशन है इसकी, वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ा सकते हैं। Okay, so everyone, should we begin? Let me know in the chat section. चलो, let's start. और ये वाला टॉपिक ऑब्वियसली ये पिछले सेशन का कंटिन्यूएशन टॉपिक है। एक in the last session, if you remember, we had learned one very important principle. एक important चीज पढ़ी थी, क्या थी वो? That was about the force which was experienced. Force which was experienced by whom? By a current carrying conductor. और तीसरा फैक्टर क्या था? करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स, और थर्ड वन इज दिस कंडक्टर वाज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यही हमको आज इसी के ऊपर बेस्ड, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। ठीक है, सो वी विल बी बेसिकली लर्निंग ये जो फोर्स है, करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर को हम अगर रखें एक मैग्नेटिक फील्ड में, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B, एंड आई हैड टोल्ड यू F, और वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स बिकॉज ऑफ विच इट स्टार्ट्स मूविंग। सो दिस प्रिंसिपल वी विल बी यूजिंग। और एफ बी आई, ये देख के आपको ये याद आया होगा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच वी हैव डन लास्ट सेशन, दैट वाज कि ये डायरेक्शन जो है फोर्स का, ये हमने कैसे फाइंड किया था, यूजिंग विच रूल? दैट वाज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आज भी हम यूज करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, चलो, सो लेट मी शो यू डायरेक्टली, वीडियो में देखते हैं और समझते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आप वीडियो में देखो और बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर कहां पर देखी है हमने? डू यू नो दिस इज एक्चुअली, ये तो इलेक्ट्रिक मोटर है, लेकिन डेली लाइफ में हैव यू seen, have you experienced that where this electric motor is used? So ये एक कॉमन चीज है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? दिस इज अ, what is it? It is a rotational device. Okay, rotating device which converts electrical energy to mechanical energy. Whenever there is movement, we say that it is because of the मैकेनिकल एनर्जी। तो ये रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मूवमेंट। सो ये कैसे होगा, और ये हमने कहाँ देखी है? ये घर में हम जो भी एनीथिंग विच इज रोटेटिंग, मूविंग, व्हेन यू स्विच ऑन, ओके, स्विच चालू करते हैं तो क्या क्या मूव होता है घर में? फॉर एग्जाम्पल द फैन, फैन के ब्लेड्स, फैन मूव करता है। देन इफ यू स्टार्ट अ मिक्सर, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सारी चीजों में कुछ ना कुछ फॉर्म का रोटेशन या मूवमेंट हम देखते हैं, which is required for this appliance to work. So all of this happens because of electric motor.
सो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट विल बी योर आंसर? Yeah, that is right. It is a rotating device which converts electrical energy to mechanical energy. Mechanical energy में भी specifically कौन सी energy? Mechanical energy में specifically it is the rotational kinetic energy. Mechanical energy के दो फॉर्म आपको पता है, kinetic and potential. अब potential तो stored होती है, motion वाली कौन सी होती है? Kinetic. और उसमें भी ये specifically ये motion है rotational motion. That's why specifically this mechanical energy is the rotational kinetic energy. Okay, so now you know what this device is and where it is used. So इसकी वर्किंग पढ़ने से पहले इसका प्रिंसिपल एक बार और देख लेते हैं. So as we know, a current carrying conductor placed in a magnetic field will experience a force because of which the conductor starts moving. Now in this conductor, if the current is in the upward direction, तो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये अलग है. सी देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, वन इज ऑफ द कंडक्टर एंड ये तो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? दैट वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन बिटवीन. कंडक्टर के लिए हम एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे बाय प्लेसिंग इट बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स. तो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इसकी वजह से कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ठीक है, ये ही है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. सो लेट अस सी इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग के पहले कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं. व्हाट आर द बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन कैसी है इसकी. तो पहली बात यू सी देयर इज एन आर्मेचर कॉइल. व्हाट इज एन आर्मेचर कॉइल? It's nothing, लेकिन बस it's just this copper wire. Okay, this insulated copper wire. Let me show you. I'll show you. See, ये part. This rectangular form में एक copper wire है. Okay, like this. Let me draw here and show you. इस फॉर्म में ये है copper wire, insulated copper wire. Okay, arrow नहीं अभी दिखाने की जरूरत फिलहाल, वो डायरेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे. तो ये जो कॉपर वायर है, एंड यू कैन प्लेस एन आयरन कोर इन बिटवीन. ये नहीं भी रखा तो भी इट्स ओके, बट व्हेन वी प्लेस एन आयरन कोर तो इसकी जो रोटेशन है वो और फास्ट हो जाता है. दैट वी विल सी. सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एन आर्मेचर कॉइल. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इन दिस इलेक्ट्रिक मोटर? So you can see here now, yes, यहाँ पे भी highlighted है, देखो ABCD is the armature coil. Second thing we need is a strong magnet. So यहाँ पे देखो magnet, एक magnet का ये north pole है और दूसरे magnet का ये south pole है. And because ये एक north pole और एक south pole, तो हम ये magnetic field एक create कर रहे हैं, और इस magnetic field का direction क्या होगा? Obviously from north to south. ठीक है, डायरेक्शंस के बारे में और बात करेंगे. बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज द अदर थिंग वी नीड हियर. आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वी नीड स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर. सी हियर, अगर आपको पता नहीं है स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर क्या होता है, जस्ट सी हियर स्प्लिट रिंग. स्प्लिट रिंग के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है. इट इज लाइक अ रिंग, ओके, अ रिंग विच इज स्प्लिट. अब मेरे पास अगर ऐसा एक रिंग है, ओके, and if I just split this ring, ये दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया. ठीक है, wait, I will make it like this. ठीक है, ये एक रिंग दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? This will become a split ring. That's it. It will be like this. तो इसमें क्या है? गैप हो जाएगा रिंग में. It's not a complete ring. तो here you can see this PQ. ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज अ मेटालिक स्प्लिट रिंग. ओके, एंड यहाँ पे लिखा है इट एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर. व्हाई इट इज रिटन एज अ कम्यूटेटर? क्योंकि
It is a device which is going to reverse the direction of current. What is a commutator? Commutator is a device which helps in reversing the direction of current. Why we need it? Why we need to reverse the direction of current? Because अगर इस अरेंजमेंट में हमने करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो ये अगर मेरी कॉइल ऐसी है, one minute, let me see if you can see my hand as a coil. Okay, wait, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लैग कर रहा है. So then this will keep on, if this is going from here to here and then it will come back again, it will come here, half turn ऐसे गई, फिर से half turn ऐसे आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे. But we don't want the coil to move like this. We want it to have a full turn. Okay, so if I have, let me show you, if this is my coil for example, I will want it to move completely like this, है ना. So I don't want it to move ऐसे आधा फिर आधी इधर आधी इधर आधी इधर. So इस complete rotational movement के लिए I will need a commutator. Okay, and split rings यही काम करने वाले हैं. How they will do that? That we will see very shortly. Then what is the next thing in the arrangement? Split rings के बाद next important चीज है. So split rings में this is the turquoise, these blue metallic rings. Okay, and then we have an axle. Axle बीच में ये जो दिख रहा है हमें एक छोटा सा पेन के जैसा, you know, like this axle. It helps in the rotation of the coil. That's the axle, yeah, shaft. And then we have brushes. ये देखो X and Y, these are the carbon brushes. Sorry. So because these are carbon brushes, ये देखो ये जो ब्लैक में ये सर्कल क्या है, रेड सर्कल, X and Y, ये कार्बन ब्रशेस हैं. कार्बन ब्रशेस क्यों चाहिए? अब कार्बन ब्रशेस इसलिए बिकॉज ये रिंग जो है मेटल का बना है, मेटल, और ये वायर है. देखो दिस ब्लैक वन, दिस वायर इज कनेक्टेड टू दिस रिंग. इफ वी डोंट पुट दीज कार्बन ब्रशेस तो ये वायर ये रिंग के साथ ही ऐसे घूमती रहेगी. हमें ये कार्बन ब्रशेस यूज करने हैं बिकॉज कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मेटल टू द wire which is connected to the battery. And then let's see what is the next important thing. बैटरी तो चाहिए ही. if we don't have a battery तो हमें electrical energy कहाँ से मिलेगी? we know that electric motor ये क्या convert करने वाली है? this is going to convert the electric energy to mechanical energy. Now this electrical energy we are going to supply, ये दो फॉर्म की हो सकती है, या तो AC या तो DC, या तो डायरेक्ट करंट या alternating current. So we are going to study about the direct current DC motor. So this is a DC motor. Okay, direct current means when the current is moving only in one direction, उसको बोलते हैं direct current. and alternating current वो हर half cycle में direction change करता है. तो डीसी सोर्सेस क्या होते हैं? डीसी सोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है बैटरी. एंड इफ वी स्पीक अबाउट एसी सोर्स का तो एग्जांपल होता है लाइक स्विच इज द मेन सॉकेट्स इन आवर हाउस, वो एसी सोर्स होते हैं. ठीक है, तो बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट डीसी मोटर, इसलिए हमें चाहिए ये बैटरी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास होगा कॉइल से, एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, and hence there will be a force experienced by the coil because of which that coil is going to move. Okay, I hope it's clear till here. Chalo, ab let's I'll just erase all this and now we will see the working of the motor. So let us consider, okay, I'll show you एक थोड़ा, I think यहाँ पे आपको बहुत अगर clearly नहीं दिख रहा है, let me just mark it here and show you. ये है मेरी rectangular coil.
1 minute. Okay, I'll just make a rough diagram here. So this is my coil ABCD, and this is connected to, these are the split rings. Split rings को connected है through carbon brushes, and then this is the battery. Okay, wait, I'll make it on the right side. यहाँ पे भी दिखेगा नहीं ठीक से. Just let me make it here. Okay, so I'll make the rectangular coil, and carbon brushes, the split ring, and then it is connected to our DC source, which is the battery. Now here the current is passing in which direction? Let me see. A, B, C, D. Okay, so A, B, C, D. So positive से negative direction में ही जाने वाला है current. So I am going to mark in blue the direction of the current. यहाँ से, okay, ये देखो. Direction of the current is here, and magnetic field I have kept here north. This is the north pole of the magnet, and this is the south pole of the magnet. So I have a magnetic field. Magnetic field का direction कहाँ है? It is north to south. अब यहाँ पे देखो direction हमें बहुत ध्यान से देखना है, because we have to understand in which direction the motor is going to move. Magnetic field का direction मैं pink से दिखा देती हूँ, क्योंकि blue से मैंने current का direction दिखाया है. Okay, now let us concentrate on this arm AB. Okay, AB of the coil. तो ए बी में अभी हमें फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है. सो जस्ट स्ट्रेच द 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड. सो यू रिमेंबर थंब, forefinger and center finger. So the thumb is the F force which will be experienced. ये है forefinger है magnetic field F B I and this is the current. ठीक है. अब देखो ये A B में the current is in the upward direction and the magnetic field is from left to right. So current in the upward direction and magnetic field is left to right. ठीक है. Current is upward and magnetic field is left to right. So मेरी coil कहाँ move करेगी? If this is my plane of paper, so this end AB, this will move in upward direction. Right? AB will experience a force, and इसकी वजह से ये देखो यहाँ पे current is passing from A to B. Okay, A to B and this. Okay, sorry, downward direction. AB is going to move in the downward direction. So let's see. पहले ये current pass करेगा from A to B. AB will move in the downward direction. By applying Fleming's left hand rule, we'll find the direction. And same चीज जब आप arm CD में use करोगे तो CD will go in the upward direction. तो ये जो coil थी जब ऐसी थी, okay, this was my coil, and now this will be moving like this. AB will go downward and CD will go upward. So ये देखो the black arrows here, they are showing the movement. तो coil पहले ऐसी थी, अब ऐसे move होगी. Okay. Now once this coil moves, once it comes in this position, and we also know once it comes in the, यहाँ पे the magnetic field and the current, they are perpendicular to each other. इसलिए the force experienced by the conductor will be the maximum. Now जब ये coil ऐसी vertical position में आ गई, पहले horizontal position में थी, okay, horizontal position में थी, अब ये आ गई vertical position में turn होने के बाद, क्योंकि horizontal में इसका current AB का इस तरफ था. Okay, wait, current is this side and magnetic field is this side, yeah, like this. So the coil, this AB went in the downward direction. तो ये horizontal से ऐसे आ गई, vertical direction हो गया coil का.
Now when the direction of the coil became vertical, then what will happen? अब मैंने आपको बताया था ये स्प्लिट रिंग में गैप्स हैं, ओके। तो जब ये वर्टिकल हो जाएगी तो इसका कांटेक्ट बैटरी से टूट जाएगा, ओके, like this it was, and now it becomes this way. Then there will be no current passing through the coil, but still it will keep on moving because of the inertia of motion, और वो इस position में आ जाएगी, okay. So let me show you now the next. So this ABCD जो हमने पहले बनाया था, first I am showing you here. अब second, when this completes half turn, तो ये कैसे दिखेगी? Let me show you. Now this will be, so split rings हैं, brushes हैं, और ये बैटरी. अब AB has moved and come to this side. अब AB यहाँ पे आ गया और CD will come to this side. ठीक है, देखो AB was here and now it has moved, so AB has come this side और CD इस तरफ आ गया. Now what has become the direction of current? Direction of current, पहले क्या था direction of current? See here, it was ABCD. First it was ABCD. Now if you see direction of current क्या हो जाएगा? ये देखो, it is like this now. So now the direction of current is, it has reversed, it has become DCBA. Okay. Now here again, यहाँ पे ये जो CD है, arm CD. Now यहाँ पे ये, this had moved downward and this had moved upward. Now if this current is in this direction, तो ये फिर से CD जो है, the direction of current has reversed, so this will now go again downward and this will go upward, so that the coil keeps on rotating in the same position and it does not get reversed. ठीक है, see here, we can see, and यहाँ पे it experiences in electric motor, the two arms are experiencing, the AB and CD for example, experiencing two equal and opposite forces, which is known as a couple, okay. So in this position, ये देखो vertical position हमें दिख रही है, यहाँ पे ये contact जो है टूट जाएगा and then it will keep on moving because of inertia of motion. Now the direction of current becomes reversed and will keep, and ये reverse क्यों हुआ? Because of the action of the split rings, ठीक है, because of the action of the split rings the direction has reversed. अगर ये split rings नहीं होते तो फिर ये direction reverse नहीं होता, okay. चलो let's see the, so in this way the coil will keep on moving. अब ये जो force experience कर रही है coil, this depends on what factors? So we know that F is directly proportional to B, that is the strength of the magnetic field. It is also proportional to the current passing through the conductor, and third factor क्या है? To the length of the conductor. और इसको हम अगर constant डाल दें, this becomes K bill, और when we use in SI units K की value 1 आती है, so I can write F is equal to bill, okay, magnetic field, current and length of the conductor. तो अगर मुझे इसकी रोटेशन, so how fast do you want the coil to rotate? That will depend on the force which is acting on the coil. तो अगर मुझे force को increase करना है, I can do it in three ways. Either by increasing the magnetic field, I can use a stronger magnet, or I can increase the current, or I can increase the length of the coil. यानी कि या तो मैं area या number of turns of the coil ये increase कर दूं, तो इस कॉइल को मैं और भी फास्ट मूव करा सकते हैं इन द इलेक्ट्रिक मोटर. सो रोटेशन विल वर्क इफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज ऑन, ठीक है. सो दिस इज एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल दिए हैं, देखो, व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. मिक्सर, ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, वॉशिंग मशीन में आल्सो देयर इज अ मोटर, हेयर ड्रायर्स में, रिकॉर्ड प्लेयर्स में, ओके. So these are some examples. Blower, जहाँ पे electric motor is used for the working. So let's see now some
questions based on this topic. फटाफट उनका आंसर देखते हैं. So you can give me the answer in the comment section. So let's start here. 1 minute. Okay, so I hope it's now visible. So first question is here on your screen. Let me see अगर वीडियो में ठीक दिख रहा है. Question is, an electromagnet is a device. What is an electromagnet? Electromagnet, you know, it's a type of a temporary magnet, and that is a magnet. Magnet क्यों बना वो? क्योंकि electricity was passing through it, and we know any current carrying conductor produces a magnetic field around it. So what will be the correct option here? Produce electric field when current flows through it. Yeah, produce magnetic field when current flows through it. Yeah, that produces mechanical rotation when current flows through it. What is an electromagnet? Yeah, none of these. Yes, tell me the answer. ये देखो A, B, C, D आप समझ लो, ये चार ऑप्शन है. Which one will be the correct answer? So electromagnet नाम में ही इसका आंसर है. So it produces a magnetic field when the current flows through it. That is an electromagnet. Okay, so let's see the next question and we'll try to answer that one. In a rectangular loop, the alternate branches will have. अभी electric motor में we have seen this was a rectangular coil, right? So ये ABCD थी coil, and what was the direction of current here? Current का direction अगर AB में ऐसा था, CD में it was like this, right? So what will we write? Rectangular loop में alternate branches like AB, BC is here and ऐसा current. That is if I am connecting this end to the positive and this one to the negative. Okay, बाकी यहाँ पे brushes और splittering है. तो different current, equal current but in opposite direction, equal current in the same direction, yeah, none of these. So what will be the answer? Alternate branches means like A, B and C, D. ये alternate branches हैं. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? देखो, these are exactly opposite. So they carry opposite direction is right and current is equal क्योंकि source तो same है, battery is same for both. So here the option, second option is correct. ठीक है, let's see the next question. The principle of working with electric motor, what is it? Principle is that, yes, you already know that a current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a magnetic force that causes its motion. So this is the right answer. Second one again. Okay. Let's see the next one. Electric motor is, what is an electric motor? So I had already told you the definition. Electric motor is a rotating device. And what does it convert? Rotating device तो तीनों में लिखा है. तीनों में से कौन सा ऑप्शन अब हम चूज करेंगे? Electric motor, electric to motion. Electric energy to motion यानी mechanical energy. So electric to, yes, third option is right here. It's a rotating device that converts electrical energy into mechanical energy. And we will now do the next one. So an electric motor can be used where? Television, mixer, bulb or none of these. Motor में mostly we are concerned with rotating motion. Rotating motion in सबसे किस में ज़्यादा likely है? Obviously mixer में. Bulb में क्या rotate करेंगे? What? There's no rotation. Bulb or television, right? Okay, so this is the answer. I think, yeah. अब ये है last question. The loop which is used in the electric motor is of what shape? तो ABCD कंडक्टर हमने कैसे बनाया था? इस शेप में बनाया था. So this is what shape? This is
rectangular shaped conductor, right? Rectangular क्यों चाहिए हमें? Why is it rectangular shaped? Because we want the two arms here, AB and CD. These are the two arms and they are carrying, we want them to form a couple, यानी कि more experience equal and opposite forces. Okay, so that's why this is rectangular is the right answer. Okay, so this was the last question for the quiz. So I hope this topic is clear, and और भी कुछ question है motor में which you are not understanding, let me know in the comment section. So this was all for today. Thank you for watching, and I'll see you in my next class. Have a good day.